we're still at the Dalal Street bringing you this budget special. Now, all along the Modi campaign, there has been a debate on the Gujarat model and also whether that model can be adopted at the national level. While the debate is still on, Modi for now has stated that bitter pill is needed for better times. कोई मां नहीं चाहती है कि बेटे को कड़वी दवा खिलाएं, लेकिन मां को उसको पता है कि अगर आज मैं बच्चे को कड़वी दवा नहीं खिलाऊंगा तो शायद लंबे समय के लिए बड़ा नुकसान हो सकता है। भारत की आर्थिक स्थिति अच्छी बनाने के लिए, इस संकटों से देश को बाहर निकालने के लिए कुछ कड़वे निर्णय करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। The vote on account that Mr. Chidambaram put before Parliament window-dressed all numbers, artificially announced a lower budget deficit for last year than is truly the case, postponed and did not pay certain bills that had to be paid this year. So Arun Jaitley's problem is doubly difficult because Chidambaram put forward a window-dressed budget. And this is why the budget is going to be really hard because the things the previous government postponed and did not do and neglected will have to be now paid. So the bitter medicine they should have given now will have to be given by the BJP. Chidambaram's vote on account was a scandal. And in the first taste of the bitter pill, the Railway Ministry has hiked the rail fare by over 14% and the freight rates by 6.5%, showing that the government is not afraid to take tough decisions. It was done by the previous government, and an interim budget, a consolidated budget was given by them on the basis of the fare hike. So, to meet all the necessary expenditure, I was forced to implement the order that was done by my earlier government. 30 दिन भी नहीं हुए हैं, 1 महीना भी नहीं गुजरा है मोदी सरकार को सत्ता में आते हुए, और जो ये कहकर के आए कि अच्छे दिन उनके आने के बाद में आएंगे, आज तक का शायद सबसे बड़ा पैसेंजर के हाइक 30 दिन के पहले ही मोदी सरकार ने करके देश की जनता को जो उनको वोट देने का इनाम दिया है वो हम सब लोगों के सामने है और कांग्रेस पार्टी इसकी तीव्र निंदा करता है। ये नरेंद्र मोदी जी ने कि ये कड़वी दवाई लेनी पड़ेगी, तो इनको उस समय मालूम नहीं था जब इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे, ये बात क्यों नहीं बोला? ये बात देश की जनता के सामने क्यों नहीं बोला? ये राम राज का कंसेप्ट, सबको नौकरी, सबको बिजली, सबको रोजगार, काला धन, ये सारा अच्छे दिन का जो आपने सब्ज बाग दिखाया, तो अब आप जब बैठ गए शासन में जिस तरह से मैंडेट लेकर के, तो आप अच्छे दिन के जगह पर तो पहले ही दिन आप रेलवे भाड़ा बढ़ा के भारतीय रेल के इतिहास में ये पहली घटना है कि इतनी बड़ा भारी वृद्धि हुई है। So even as the bigger corporates are keenly watching Modi's bitter pill mantra for the smaller businesses, this pill will be hard to swallow. Take for example this 14-year-old small leather bags manufacturing unit tucked away in Chennai. For 63-year-old Shamil Ghani's cutting raw leather into designer bags has been easy compared to the bureaucratic hurdles and constant power and labor crisis that he faces. The government is not helping us to do any facilities to start a new business. Whether it's a small industries business or medium one, we have to have a lot of hassle to get a bank loan, one. Second is, the labor. The labor is also, we have to train the labor according to our making some goods, for example leather goods. We have to train because we don't get a skilled or unskilled laborers particularly. Second is our taxes, for labor taxes, and there are so many taxes, tax. So that kills us. So while entrepreneurs like Shamil Ghani are hoping that the Modi government gets little things right,
India's original entrepreneurs, the farmers, are looking for corporatization of the agriculture sector that employs the nation's largest workforce. Ploughing his field under the hard sun, 55-year-old Gurmukh in Punjab is living a hard life and wants to see the real change that has been promised in many earlier budgets. ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਲਾਈਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਆ 5-5 ਘੰਟੇ ਮਸੋਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੇਤ ਭਰਦਾ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਫਿਰ ਡੀਜ਼ਲ ਫੂਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਫੂਕ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਕੁਛ 4-4 ਘੰਟੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਓ 12-12 ਲੀਟਰ ਖਾਂਦਾ ਘੰਟੇ It's ironical that on one hand, high subsidy and inflation has hit the industry. But on the other hand, young farmers like Gurpreet are facing the same fate as their fathers in this neglected sector. नहीं खेती में कोई फ़ायदा नहीं है जी खर्चे बहुत हो गए जी खाद DAP खाद बहुत महंगी है वो 250 रुपये क्विंटल होगी डाई है 600 यूरिया 600 रुपये क्विंटल हो गया जी डीजल बहुत महंगा हो गया लाइट नहीं आ रही परसों रोज़ तो यहाँ पे इसके लिए जनरेटर लगा के जीरी पार रहे हैं अभी भैया 2500 रुपया किला का मांग रहे हैं 1 एकड़ का 2500 रुपया तो इसमें खेती में कोई फ़ायदा नहीं है जी So in the end, be it a small businessman or an corporate honcho, an industrialist or a simple farmer or the Aam Aadmi on the street in front of this Bombay Stock Exchange, the question remains if Modi will be able to deliver on his promise. Will he be able to give us a blueprint to get India back on that road of recovery? The challenges are many, but the optimism is high, and we here on Times Now continue following the super budget for you.